Okay. So SFR have a special function registers, means it have some special functions with respect to the regular functions. Regular functions means as we all of you know that register is nothing but a used for store the data for temporary purpose. Store the data for temporary purpose, right? Other than the storing the data, it have some special functions. So every registers have a different special functions. So today we'll be discuss a little bit about it. I will be explain later on, but some brief descriptions today I will be given. First, what is a special function? Just I given an example. Everyone we are carry a special functions registers, and whenever any kind of transaction is done, that will be done from that particular locations, like your money purse. Whenever you are coming from your house to hostel or mess, whatever you are staying, your father is given 5,000 and your mother is given the 2,000. That is, you can put it over in your purse, and whatever is required you just used it. मतलब तुमको घर से 5,000 दिया डैडी ने, फिर मम्मी ने 2,000 दिया, 7,000 जो तुम रखे हो सारा का सारा मनी पर्स में रखे हो. इज इट क्लियर? यस सर. आने के बाद जैसे आज बैनर्जी टुडे विल बी गिवन अ बिग पार्टी. फ्रॉम वेयर ही विल बी गिव द पार्टी? फ्रॉम वेयर ही विल बी गिवन द मनी? Obviously from his money purse. Am I right? Yes. So money purse is a special function register. Is just like a accumulator. Is just like a accumulator. What is the function of accumulator? Whenever you want to add something, whenever you want to subtract something, whatever you can do, all are done through accumulator. Without accumulator is not possible. Repeat once again. If you want to add something, if you want to subtract something, whatever you want to, you can do, you can, but it should be done through accumulator. Without accumulator is not possible at all. Is it clear? Is it clear? Yes. Actually, accumulator is a common, then you can add with any other registers. Like say I want to add two numbers. One number can be stored in accumulator, other number can be stored in R0, R1, R2, any registers, right? So this is the procedure we can do, right? Is it clear? Yes. Is it clear? Actually, accumulator is a special function registers. Any arithmetical logical operations, if you want to do, it should be through accumulator. Without accumulator, it's not possible at all. Is it clear? Next, coming into the, so what are the special function registers? So number one is A. A stands for 8-bit accumulator. 8-bit accumulator, right? A stand for 8-bit accumulator. Is it clear? Everyone is clear to you? Yes, sir. Next, number two is a B register. What are the functions? B register is used only multiplications, mul and div instructions. Multiplications and division instructions. What does it mean? You want to add two numbers. Okay, no issues. But now you want to add
multiply two numbers, you want to add sorry, you want to multiply two numbers, means one number should be stored as per laws, that is in accumulator, but another number stored into where? It will be stored always in B register. Is it clear? Is it clear? Yes. सर फिर से रिपीट कीजिए ना सर एक बार Huh? रिपीट कीजिए ना Multiply. What do you mean by multiply? You should be multiply by two different numbers. Say you want to multiply. Just I am given an example. You want to multiply say wx and yz. This is a two different number, wx and yz. Maybe it's a 5, maybe it's a 10, maybe it's a 11, maybe it's a AB, maybe it's a CD, whatever it is. So wx is a number and yz is a number. Is it clear? Is it clear? यस सर So if I am multiply wx and yz, maybe the result is pqrs. Okay, maybe result is 4 digit. Okay, यस सर Yes, sir. so one number should be stored in accumulator, another number should be stored in B register. Then multiplication is possible, otherwise multiplication is not possible at all. It's clear? सर बी रजिस्टर कौन क्या है सर? B भी एक रजिस्टर है, उसके अंदर भी एक नंबर रखना पड़ेगा, तब भी जाके तुम मल्टीप्लाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे. सर ए जैसा एक रजिस्टर है एक्यूमुलेटर, बी ऐसा भी एक रजिस्टर है. सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन का टाइम में यूज्ड होगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन का टाइम में यूज होगा. तो दो सर उसको नंबर का स्पेशल मल्टीप्लिकेशन, फंक्शन नहीं बोलेंगे ना सर? हाँ बोलो. उसको स्पेशल फंक्शन रजिस्टर नहीं बोलेंगे ना? है स्पेशल फंक्शन, ये तो सारा का सारा स्पेशल फंक्शन लिखा रहा है. एक हो गया एक्यूमुलेटर, दूसरा हो रहा है बी, अभी चलता रहेगा. इज इट क्लियर? हाँ बोलो. PQRS भी तो कोई रजिस्टर है, वो उसको क्या होगा? PQRS रजिस्टर नहीं है, एक नंबर है. मान के चलो WX के जगह में, हम तो अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है इसीलिए नहीं बोल रहे. मान के चलो इधर में AB 15, इधर मान के चलो 18, दोनों को मल्टीप्लाई करके मान के चलो आया है तुम्हारा 1523. इज इट क्लियर? WX मतलब 15, YZ मतलब 18 and PQRS is a result is 1523. इसे रिजल्ट आया है. समझ में आया कि नहीं आया बोलो. यस सर. तो दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट अब तुम अभी इसके अंदर स्टोर रहेगा. इज इट क्लियर? PQRS में हाँ बोलो. सर मींस AB जो है वो SFR का टाइप्स है. AB SFR देखो, SFR मतलब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, एक हेडिंग है, उसके अंदर बहुत सारा रजिस्टर होगा जो एक एक के लिए माहिर है. जैसे मान के चलो थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल इज ए ब्रांड. आफ्टर दैट मे बी आकाश दुबे is a specialist for cricket. Maybe Aman Kumar, specialist for football. Maybe Anisa is a special function is of this person is chess. She can play the chess is very well. So something like that. Is it clear? यस सर. स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, इसके अंदर बहुत सारा रजिस्टर होगा. हम एक एक करके बोल रहे हैं, सिर्फ 2 ही बोला अभी तक, और भी बहुत सारा आएगा. अभी बी का फंक्शन समझाने के लिए मैंने ये दिखाया तुम लोगों को. जे दोनों नंबर के अंदर तुम मल्टीप्लाई करना चाहते हो, एक को तो तुम एक्यूमुलेटर में रखे हो, दूसरे को किधर रखोगे? दूसरे को तुमको बी में रखना पड़ेगा. रजिस्टर तुम्हारे पास और भी है, R02 R7 पिछला दिन दिखाया था, 32 रजिस्टर है, मगर उसमें रखने से नहीं चलेगा, तुमको बी के अंदर ही रखना पड़ेगा, तभी जाकर तुम मल्टीप्लाई कर पाओगे.
सर हाँ बोलो। ऐसा कोई लफड़ा नहीं है कि ए की जगह बी, बी की जगह ए, किसी को भी रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा 5 के साथ 2 5 के साथ 6 मल्टीप्लाई करो और 6 के साथ 5 मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट तो एक ही आएगा ना। हाँ इसीलिए पूछ सर। लेकिन ये मल्टीप्लाई में ना काम होगा, डिवाइड में नहीं ना होगा? डिवाइड में भी होगा, अभी तो अभी मल्टीप्लाई दिखा रहा है तुमको, डिवाइड में भी आ रहा है। अभी तो मैंने बोला मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन में काम में आएगा। क्या काम में आएगा हम बोल रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन में जैसे 2 नंबर के बीच का एक नंबर तुमको बी में रखना पड़ेगा। रिजल्ट का जब रिजल्ट निकलेगा पी क्यू आर एस हो गया ना, 4 डिजिट का आ गया। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो रिजल्ट का पहला 2 डिजिट मतलब लोअर डिजिट वो चला जाएगा ए में, ए में चला जाएगा आर एस एंड बी में चला जाएगा पी क्यू मतलब हायर डिजिट, बी में चला जाएगा हायर डिजिट। ओके, समझ में आया कि नहीं आया बोलो। सर आप ए में 8 बिट को स्पेसिफाई किए हैं, लेकिन बी में कितना बिट हम लोग दे सकते हैं उसमें? 8 बिट ऑब्वियसली, हर एक जो रजिस्टर बोल रहे हैं सब 8 बिट बोल रहे हैं। और अगर 8 बिट से ज्यादा रहा तो सर? 8 बिट के से ज्यादा रहा तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल है भैया। तुमको इधर प्रोग्रामिंग कोई लूप करके करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ अलग करके करना पड़ेगा। ठीक है सर। अनु बोलो, कोई क्वेरीज है? किसी का कोई क्वेरीज है इसमें समझने में? पी क्यू आर एस रिजल्ट आया। पी क्यू आर एस मैं पकड़ रहा हूं एक वेरिएबल, हम पता नहीं है क्या रिजल्ट आया, राइट? उसके अंदर जो लोअर बिट है 8 बिट वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन, और हायर बाइट जो होगा वो चला जाएगा बी में। इट्स क्लियर? यस सर। Next, I'm coming into the division part. At the time of divisions. Division में क्या होता है? एक किसी को किसी दूसरे से डिवाइड होता है। Am I right? Yes. जिसको तुम डिवाइड करना चाहते हो उसको तुमको ए में रखना पड़ेगा 100%। जिससे तुम डिवाइड करना चाहते हो उसको तुमको बी में रखना पड़ेगा। ओके? Yes. नेक्स्ट, डिवाइड करके एक रिजल्ट आएगा, मान के चलो रिजल्ट आया पी क्यू, एक रिमाइंडर आया आर एस। ओके, डिवीजन होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा एक्यूमुलेटर में पी क्यू, जो रिमाइंडर आएगा दैट इज आर एस वो चला जाएगा बी में। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। इट्स क्लियर? फिर से बताइए सर। डिवीजन करने के लिए 2 नंबर का जरूरत पड़ता है, एक को तुम डिवाइड करते हो और एक से तुम डिवाइड करते हो। Am I right? मतलब Yes, sir. मान के चलो तुम डिवाइड कर रहे हो 55 को 5 से, 55 को डिवाइड कर रहे हो 5 से, तो 55 को तुमको एक्यूमुलेटर में अंदर रखना पड़ेगा, 5 को तुमको बी में रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. डिवाइड होने के बाद एक सर रिजल्ट अलग आता है। अलग रजिस्टर में क्यों रख रहे हैं? हाँ बोलो। सर अलग अलग रजिस्टर में क्यों रख रहे हैं? एक ही में यही तो स्टोर नहीं स्पेशल कर फंक्शन है इन लोगों का, ये तुमको इसी के अंदर करके ही करना पड़ेगा, ये छोड़ के नहीं होगा। ये इसके लिए ही स्पेशलिस्ट है। जैसे मान के चलो मैंने अभी अभी बोला आकाश दुबे इज ए स्पेशलिस्ट फॉर क्रिकेट, अभी आकाश दुबे को मैंने बोलेंगे जो तुम चेस खेलो तो वो कर पाएगा? नहीं सर। आकाश दुबे को मैंने बनाया ही है क्रिकेट के लिए। ओके सर समझ गया।
हाँ, अभी मान के चलो रिजल्ट जो आया है वो PQ आया, अभी रिमाइंडर भी कुछ आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो रिजल्ट होने के बाद आ जाएगा तुम्हारा बी में, और जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा एक्यूमुलेटर। जो रिमाइंडर पार्ट आएगा, रिमाइंडर पार्ट आएगा वो जाएगा बी में, जो रिजल्ट आएगा वो जाएगा एक्यूमुलेटर में आफ्टर द डिविजन्स। इज इट क्लियर? तो और रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं तो? बचा ही नहीं तो जीरो आएगा, रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं तो जीरो आएगा। इज इट क्लियर? रिमाइंडर, if not a remainder is available, then it will be zero. So B is clear to everyone, function of B. Function is B is clear to everyone. Can I proceed for the next? So I'm going into the next. Number 3, DPH. Number 3, DPH. Number 4, DPL. सर नहीं देख रहा। Number 3, DPH. Number 4, DPL. इधर लिखो within a bracket. Higher 8 bit of DPTR. Higher 8 bit of DPTR. Lower 8 bit of DPTR. Lower 8 bit of DPTR. Together call DPTR register. Together called DPTR register. Together called DPTR register. Okay. Higher 8 bit of DPTR is called DPH. Lower 8 bit of DPTR is called DPL. Is it clear? Together call DPTR. Like DPTR is a 16-bit register. This portion is called DPH. This portion is called DPL. It's clear? It's clear to all of you? Lower 8 bit of DPTR is called DPL. This is the function of DPTR. What are the function of DPTR first? Sir, what are the address bus in 8051? Address bus? How many bits? Address bus? 8. 8 bit. Data bus is 8 bit. Address bus is 16 bit. I told several times. So any address is 16 bit. So to point any memory locations, to locate any memory locations, DPTR register is used. This is the only one register which point a memory locations. This is the only one register which is point any particular memory locations. But DPT, for memory location you require 16-bit of register, but 16-bit register is not available. That's why it's a two-part. One part is called DPH, another is called DPL. Together is a DPTR, which is it is 8-bit. So this is 8-bit. So total how many bits? This is 16 bits. So total is 16-bit. So any memory locations, any address
you can point using DPTR register. Is it clear? Is it clear? Yes, Yes. sir. Next, SBUF, full form, serial buffer register. So this is the number 5. This is a serial buffer register. This is a serial buffer register. What is the functions of serial buffer registers? Hello. So this is a special function register, is called SBUF register, serial buffer register. So serial buffer register is nothing but a, it's also 8-bit registers. Whenever any data are transmit through serial communications, it will be transmit from SBUF register through TXD. If any register is received, it should become in a SBUF register via RxD. Is it clear? The data one bit is transmit from SBUF register and received in SBUF register. So SBUF register is used to store the data which are to be transmitted or received. The data which are to be transmitted or received, it will be stored in SBUF register, serial buffer register. SBUF register is called serial buffer register. Is it clear? It's clear? It's clear to all of you? Serial buffer is clear, or any queries if you have to, you can ask me. Any Yes. queries you have? No, sir. So this is a serial buffer register. So serial buffer register is basically used for transmit and receive the data, right? Transmit and receive data. Next, that is, we have how many ports in 8051? Sir, 4. 4 port. Very good. So number 6, number 7, number 8, number 9. These 4 are P0, P1, P2, P3. P0, P1, P2, P3. So what are the functions of P0, P1, P2, P3? What are the functions of P0, P1, P2, P3? Sir, मान के चलो, in my room is in a 6th floor. सर 6th फ्लोर में जो कोई भी तुम्हारा 2nd फ्लोर में जाओ, 3rd फ्लोर में जाओ, 4th फ्लोर में जाओ, कोई भी फ्लोर में जाओ, ग्राउंड फ्लोर छोड़ के बाहर में एक कॉरिडोर रहता है कि नहीं? जी सर। अब ये कॉरिडोर का फंक्शन को बता सकते हो? क्यों, क्या फंक्शन है, क्या जरूरत है? कॉरिडोर नहीं रहने से क्या होता था? सिर्फ रूम रहने से क्या होता था? बोलो, ट्राई करो, सोचो। कॉरिडोर मान के चलो नहीं है, सिर्फ रूम है, और रूम से नीचे एकदम पूरा नीचे है, तो क्या है? मान के चलो कोई रूम से निकला और कोई रूम के घुसना चाहता है, मगर रूम अभी बंद है, तो as there is a no standing places in that particular, in the front of that particular room, so क्या होगा? नीचे गिर जाएगा,
6 फ्लोर से नीचे गिर जाएगा और 2nd फ्लोर से नीचे गिर जाएगा और 3rd फ्लोर से नीचे गिर जाएगा, ऐसा ही होगा। इट्स क्लियर टू यू? इज क्लियर टू यू? यस सर। इसको बोलते हैं बफर रजिस्टर, इसको बोलता है बफर रजिस्टर, इसको बोलता है बफर रजिस्टर। सो P0, P1, P2, P3 जो पोर्ट से जाएगा और पोर्ट में आएगा, ए के लिए एक P0 रजिस्टर है, एक P1 रजिस्टर है, एक P2 रजिस्टर है, P3 रजिस्टर है। देयर आर 4 रजिस्टर which is name is P0, P1, P2, P3 to store the data which are to be transmitted through the particular port or it should be received through that particular port. That's why this is a 4 port P0, P1, P2, P3. Is it clear? It's clear to all of you? Yes, sir. So next, is, so already we are past 9. Next is SP, number 10. Full form is of SP is a stack pointer. Full form of SP is a stack pointer. It's used to point the stack. It used to point the stack. What does it mean, stack, sir? Stack just like a cycle garage. Just like a cycle garage. Means maybe in a cycle garage, what is happen? Whenever you put your cycle one after another, who will be getting the cycle at first? कौन साइकिल पहले मिलेगा किसको? ऐसे तुम रख दिया मान के चलो 50 तो साइकिल। साइकिल गैरेज कभी देखे हो? नहीं देखे हो? देखे सर। साइकिल लास्ट गैरेज वाला को में पहले मिलेगा। लास्ट वाला को पहला मिलेगा, वही है स्टैक। स्टैक पॉइंटर कर रहा है, पॉइंट कर रहा है लास्ट वाला को। अभी कोई आएगा तो नेक्स्ट जो आएगा उसको पॉइंट करेगा, जो हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करेगा। तो जब निकलेगा तब भी लास्ट से निकलेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Remember one thing, it's a very important. I am not explaining now, I will be explained after 5 days of class. Every register by default 0, only stack pointer by default 07H. Every register by default 0, but stack pointer by default value is 07H. Question is why? It will be explained after 5 days of your class. Today is not possible to explain because you unable to understand. Stack pointer by default value is 07, but rest all the register by default means at the reset condition its value is 0, but stack pointer value will be 07H. It's clear to everyone? Yes, sir. जी सर। क्या रीजन है क्यों 07 है, बाकी सारा 0 है, ए क्यों 07 है? आई विल बी एक्सप्लेनिंग आफ्टर 5 days. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जी सर। नेक्स्ट, तुम लोग पढ़े होंगे टाइमर। हाउ मेनी टाइमर्स आर देयर इन 8051? बोलो कितना टाइमर है? 2 टाइमर सर। क्या क्या नाम है? टाइम 0, टाइम 1। नॉट टाइमर 1, टाइमर 0। टाइमर 0, टाइमर 1। वेरी गुड। टाइमर 0, टाइमर 1। एक्सीलेंट। सो एक कितना बिट का होता है? कितना बिट का होता है? 16 बिट। 16 बिट। इसीलिए फॉर टाइमर 0 it's also dividing into the 2 part. This is called TI0, this is called TL0. Together is called timer 0. And for timer 1, it's another one, TH1 and TL1. So next, is it clear to everyone? So next, number 11, TI0
TH0, number 12 TL0, number 13 TH1, number 14 TL1. It's clear? It's clear to all of you? Yes. Together is timer 0. Together is timer 1. Okay? Is it clear? Yes, sir. So what are the function of this TH0 and TL0 and TH1 and TL1? Sir, whenever you are counting the pulse, means say you are starting from 0000H and continue, how much it will be continue up to FFFF. FFFH. So where it will be stored? It should be stored anywhere. First 0, then 01, then 02, then 03, then 04, then 05, then 06, as so on and so forth. So it should be stored in a register. Where it will be stored? It will be stored in that particular register TH0 and TL0. Where it is stored for timer 1, it will be stored in TH1 and TL1. It's clear to you? It's clear to you? Yes, sir. So this is TH0 TL0 and TH1 TL1. So total our complete till now is a 14. It's clear? It's clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Next is PSW. Full form program status word. Full form program status word. Full form program status word. Is it clear? Full form is program status word. So what are the functions of program status word? Every register is 8-bit. All are 8-bit. It's also 8-bit. Program status word. So what are the function of program status word? सर कभी कोई रिजर्वेशन काउंटर में गए हो बड़ा बड़ा स्टेशन में, लाइक रांची, लाइक यू नो मे बी धनबाद, मे बी हावड़ा स्टेशन, मे बी शियालदह स्टेशन. रिजर्वेशन काउंटर मीन्स ऑनलाइन रिजर्वेशन, टिकट रिजर्वेशन काउंटर. नहीं गए हो तो कभी जाना तो तुमको दिखाई देगा. एक बड़ा बड़ा बोर्ड रहता है, उस बोर्ड में लिखा हुआ रहता है, मान के चलो 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6 गंगा सागर एक्सप्रेस, 3A ग्रीन, 2A येलो, SL रेड. मतलब क्या है? गंगा सागर एक्सप्रेस में समथिंग डेट में और आज का डेट में 3AC में सीट अवेलेबल है, 2AC में येलो है मतलब RAC है, स्लीपर क्लास में आइदर वेटिंग लिस्ट है और टिकट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. इज इट क्लियर? Yes. अभी तुम पूछने जाओगे बोर्ड में क्यों नहीं लिखा हुआ है. हाँ बोलो. ये भी याद रखना पड़ेगा. हाँ, ये जो बोले कि इतना इतना है, या फिर एग्जांपल है ये सर? एग्जाम्पल, दिस ए स्टोरी सुना रहा है. गल्प स्टोरी तो करना पड़ेगा ना, तुम लोगों से स्टोरी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा. PSW समझाने के लिए स्टूडेंट. तो अभी तुम पूछोगे जे सर कितना 3AC में टिकट है, तो वो देख के पता चलेगा. हाँ, नहीं सर. वो देखने से तुमको पता नहीं चलेगा कितना सीट है, मगर एक स्टेटस तुम जान सकते हो जो टिकट अभी अवेलेबल है कि नहीं है. बेकार काउंटर में खड़ा होकर रहोगे, उसके बाद तुमको टिकट नहीं मिलेगा, तो खड़ा होकर फायदा क्या. इसीलिए ये बोर्ड दिया गया है. इसको बोलता है स्टेटस बोर्ड. इसको बोलता है स्टेटस बोर्ड.
कोई कोई ऑफिस में देखना एक स्टेटस बोर्ड रहता है, मिस्टर एक्स डायरेक्टर इन और आउट लिखा हुआ रहता है ना, इन रहता है तो इन, आउट होता तो आउट, एम आई राइट? रहता है कि नहीं? रहता है कि नहीं रहता है, बोलो। यस सर। रहता है उसका पता मतलब नहीं। अभी इसका स्टेटस है जे ही इज प्रेजेंट इन द कॉलेज, बट वेयर ही इज, whether is possible to take any calls with you or not, ये बोलना बहुत मुश्किल है। मगर इसका स्टेटस से तुम जान सकते हो वो अभी कॉलेज में है और स्कूल में है कि नहीं है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। तुम लोग कभी कभी देखते हो घर का बाजू में, अरे उसके घर में लाइट जल रहा है, मतलब वो है अभी। सो दिस इज जस्ट लाइक ए स्टेटस। अभी घर में कौन कौन है, क्या है, नहीं है, तुमको पता नहीं चलता है, सिर्फ लाइट जल रहा है मतलब कोई ना कोई है। सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ PSW, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, हर एक चीज का तुमको स्टेटस पता चल जाता है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, हर एक चीज का स्टेटस तुमको पता चल जाता है, राइट? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, हर एक चीज का स्टेटस पता चल जाता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ PSW, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। वेदर एडिशन करने के बाद कैरी आया कि नहीं, वेदर एडिशन करने के बाद बोरो आया कि नहीं, वेदर जो रिजल्ट आया है वो इवन पैरिटी है क्या ऑड पैरिटी है, राइट? वेदर द रिजल्ट जो आया वो नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, ये सारा कुछ PSW से पता चल जाएगा। I will be explain PSW later on in a details, but I'm just given a brief idea about over here. Okay, it's clear? यस सर। Yes, sir. Next, number 16, that is TCON. Full form timer control. Full form timer control. तुम्हारा कंट्रोल किधर से होता है? तुम्हारा बॉडी का सारा कंट्रोल किधर से होता है? माइंड से। हैं? ब्रेन से। माइंड से। हर एक ब्रेन में जो ऊपर में जो सर बैठा हुआ है ये सारा बॉडी का कंट्रोल करता है। इसके अंदर मान के चलो हाथ का कंट्रोल करने वाला कोई है, पैर का कंट्रोल करने वाला कोई है, सब अलग अलग आईसी लगा हुआ है। ऐसा टाइमर का कंट्रोल के लिए टी कौन है? टी टाइमर कंट्रोल। कैसे टाइमर को कंट्रोल किया जाएगा, कब एट काउंटिंग करेगा, कब बंद रहेगा, कौन सा मोड में काउंटिंग करेगा, सारा कुछ टाइमर कंट्रोल से होगा। और एक है 17 में टी मोड, फुल फॉर्म टाइमर मोड, फुल फॉर्म टाइमर मोड, फुल फॉर्म टाइमर मोड। So what is the functions of T mod? To select the various mode, कौन सा मोड में काम करेगा, कौन सा मोड में अभी काउंट करेगा, बहुत सारा मोड है टाइमर का। It should be counting by the T mod registers. So T mod is basically used to select the various mode of the timer, various mode of the timer. That is the function of T mod, right? Next, 18. IE, full form interrupt enable, full form interrupt enable. What are the functions of interrupt enable? It's also very important and very interesting. मान के चलो हम तो चाहते हैं हर एक इंटरप्ट ऑन रहे। What does it mean? हम चाहते हैं कोई ना कोई अभी सर फुल फॉर्म क्या बोले सर? फुल फॉर्म क्या बोले? इंटरप्ट इनेबल, इंटरप्ट इनेबल। हम तो चाहते हैं हर एक इंटरप्ट इनेबल रहे, मतलब तुम लोग जितना सारा स्टूडेंट हो कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछो, कम्युनिकेट करो, हमारे साथ कम्युनिकेट करो, समझ में आया नहीं समझ में आया, क्या प्रॉब्लम हो रहा है हमको बोलो, हम सॉल्व कर देंगे। मगर ऐसा भी तो टीचर कोई ना कोई तो होगा जो चाहता है तुम लोग बात ही ना करो। तुम बात करने से दिक्कत है, मैं पहले ही बोल दूंगा अरे भाई नंबर हमारे पास है, ज्यादा तंग मत करो, क्वेश्चन ज्यादा करोगे तो नंबर में ज्यादा क्वेश्चन हम करेंगे, तब मुश्किल में आ जाओगे। ऐसा भी होता है कि नहीं?
क्या नहीं होता है? हेलो, अरे सब इंटरप्ट को डिसेबल कर दिया क्या मैंने? हैं? संतोष बोलो, यस सर। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा बोले नहीं आज तक कोई सर। ऐसा नहीं, मतलब इस जगह में नहीं, पूरा लाइफ में कोई ना कोई जगह में तो बोले होंगे। घर में हाँ होता बोला था है, स्कूल में। बाहर में बोला है, स्कूल में बोला है। इधर बोलने हमको बोलो मत, क्योंकि हम उस सर को बोल देंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना, तो नंबर घट जाएगा। हम इधर बोलने का जरूरत नहीं। अगर ऐसा होता है कि नहीं लाइफ में? होता है सर। होता है। तो दिस इज कॉल enable interrupt or disable interrupt. So I can disable the interrupt or I can enable the interrupt. I can disable the interrupt or I can enable the interrupt. हम disable करें क्या enable करें, all are depend upon the IE. Full form is interrupt enable. Full form is interrupt enable. Is it clear? यस सर। Next it. तो इंटरप्ट अभी मान के चलो तुम्हारा सारा इंटरप्ट मैं क्या करके रखे, ऑन करके रखे, इनेबल करके रखे, क्या डिसेबल करके रखे? ऑन करके सर। मैंने बोला सारा इंटरप्ट इनेबल रखो। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आईपी फुल फॉर्म इंटरप्ट प्रायोरिटी। इंटरप्ट प्रायोरिटी, हम किसको पहले प्रायोरिटी दे, हम किसको पहले प्रायोरिटी दे वो डिपेंड करेगा आईपी के ऊपर। हम नीतीश को देंगे क्या, लालू प्रसाद को देंगे क्या अंकित को देंगे क्या, अनिशा को देंगे, किसको देंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय मी बिकॉज आई एम द बॉस। हम जिसको चाहे उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, हम जिसको चाहे उसको लोएस्ट प्रायोरिटी देंगे। हमारे पास हमारा प्रायोरिटी का हिसाब हमारा होता है। समझ में आता हो कि नहीं? नहीं आया तो हम और एक एग्जांपल दे। सर मोदी राहुल। हम और एक एग्जांपल देते हैं। जब हम फोन करते हैं तुम लोगों को, वो सर का फोन ना वो थोड़ा साइलेंट करके रख देते हैं। जब कोई के फ्रेंड का फोन आया, अरे ना इसका फोन तो पकड़ना पड़ेगा, हेलो कैसे हो। तो दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटी। मान के चलो तुम्हारे पास दो फोन है, एक तुम्हारा फ्रेंड फोन किया उसका, एक हम किए उसका, तो तुम लोग क्या करोगे? किसका फोन पकड़ोगे पहले? संतोष क्या बोल रहा था? सर बोल रहा था वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। सिचुएशन जो भी है, दोनों एक साथ फोन किया तो वही सिचुएशन ही नहीं है अभी। सर जो ज्यादा दिमाग खराब करता है उसका नहीं उठाएंगे हम। तो हम ही दिमाग खराब करते हैं, तो मतलब डायरेक्ट तो बोल नहीं पाया तो ऐसा घुमा के बोल दिए। तो एक्चुअली हमारा फोन नहीं पकड़ेगा, संतोष उसका फ्रेंड का फोन पकड़ेगा। तो यही होता है प्रायोरिटी, जिसको किसी का हाईएस्ट प्रायोरिटी रहता है, किसी का लोएस्ट प्रायोरिटी रहता है, इस बीच पे सारा का सारा प्रायोरिटी सेट हुआ रहता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। जी सर। नेक्स्ट नंबर 20, PCON, full form power control. Full form power control. Full form power control. To control the power consumption of a microcontroller. To control the power consumption of a microcontroller. To control the power consumptions of a microcontroller. To control the power consumptions of a microcontroller. Is it clear? Is it clear? Clear to you? Yes. Next, number 21. This is SCON. Serial control. To control the serial communications. To control the serial communications. To control the serial communications of a microcontroller. To control the serial communications of a microcontroller. To control the serial communication of a microcontroller. Is it clear? Is it clear to all of you? Yes, sir. So
now I'm going into the सर ये कंजक्शन और सीरियल वाला थोड़ा बता दीजिए। ISCON कंजक्शन और पावर कंट्रोल और सीरियल कंट्रोल थोड़ा बता दीजिए डिफाइन करके। power control, I will be explain from 15 onwards, all will be explained later on, क्योंकि हर एक का बीट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये शॉर्ट नोट में भी आएगा। लास्ट में अभी शुरू होगा एक एक करके। पी कौन बोल रहे हो तो पावर कंट्रोल, माइक्रो कंट्रोलर कितना पावर कंजम्पशन करेगा वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। माइक्रो कंट्रोलर कितना पावर कंजम्पशन करेगा वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। टू कंजम्पशन ऑफ ए माइक्रो कंट्रोलर, power control means power consumption of a microcontroller, that is defined by the this one. Is it clear? कितना power consumptions करेगा? And then last one, that is the SCON is serial control. Serial control means serial communications. Serial communications कैसे होगा ना होगा उसका डिपेंड करेगा serial control से। It's clear? Is it clear to all of you? Yes, sir. इधर से हम लोग बोलने ही वाला है। ये द फीचर्स, ये मैंने पिछला दिन बताया था। एक बार देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ये है हम लोगों का फीचर्स जो हम लोग पिछला दिन बताया था। नेक्स्ट, दिस इज द another also, this is also a architecture, but whatever the diagram I drawn, it will be better for you. No issues for that. This is also a architecture. Yes, C is a short form. A ROM is a 4 kilobyte. ROM is a 4 kilobyte. You know, ROM is a 4 kilobyte. RAM is a 128 byte. Timer is a 2 timer is there. IO pins 32 IO lines is there. Serial port 1. Interrupt sources 6. What sir आपने तो 5 बोला था, कल दिखाया था ना मैंने। 2 बाहर से आ रहा है, 3 अंदर से जा रहा है, जो डायग्राम मैंने दिखाया था, याद है डायग्राम? याद है कि नहीं है? देखो मैंने इधर दिखाया था। इंटरप्ट कंट्रोलर 2 बाहर से आ रहा है, 3 अंदर से जा रहा है। मैंने तो 5 दिखाया था, इधर लिखा है 6। हॉल्ट बोल के एक होता है और रीसेट बोल के एक होता है, जो भी बोलो। रीसेट बोल के एक होता है, उसको भी ये लोग इंटरप्ट हिसाब से पकड़ता है। इसीलिए जब हम पिन कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे तो हम बोलेंगे रीसेट क्या है। इज इट क्लियर? Yes. देखो कंपैरिजन बिटवीन 8051, 8052 एंड 8031। 8051 में क्या है, 4K मेमोरी है इंटरनली, जो हम लोग अलग दिखाया था। रैम 128 बाइट, 2 टाइमर्स, IO pins 32, 1 serial port, 1 serial communications. 8052 is advanced. Just देखो 4K is a 8K, 128 byte is a 256, timer is 3, but rest or 3, interrupt will be 8. And 8031 is a lower version of 8051, so 0K. So these are the features. Okay. So next, these are the 5.1 family member. We are given only 5-6 ICs, but in the market more than 1 lakh type ICs is there. Why it's called 5.1 family member? Because you know the instruction set is same. Instruction set is same. That's why it's called 5.1 family member. These are the 5.1 family member. These are the 5.1 family member, and these are the 5.1 family members. This is the pin configurations. So you should be drawn first this one in your copy, then I will be explained. So I will be explain it tomorrow, but today you should be drawn it by your copy. So you are taking a screenshot so that you can drawn in your home. Okay. Okay, done. Sir, where is the diagram?
in a slide? Sir, in the slide we are seeing that feature of 8085. Sorry, 8051. It is not changing. No, sir. So you should be say. Now it's showing. Yes, sir. It should be done by you. Tomorrow I will be explain what are the functions of each pin. Okay. Tomorrow my classes is there. No, sir. Tomorrow is not there. So day after tomorrow. According to routine, sir. Huh? No, sir. Day after Saturday, tomorrow? Sunday. No, sir. Saturday, no. And Saturday your classes is not there. no, sir. But No, some other classes is there, or you are now free. It's your free time, or you have some classes. so there are some classes. Okay. So then again we will be resume this class on Monday. Okay. Okay, sir.